Hello everybody, hope you all are doing good. So today we will see lecture number 4, actually not 3. This is a lecture number 4 from the subject numerical methods, and today's topic is about how to choose an initial approximation when it is not known to us. Okay, say for example I have a equation like this: x square minus 4x minus 10 is equal to 0. Find the root using bisection method. This is your question. And clearly in this question, your initial approximations are not given, right? Then how can we solve this question? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस वहीं से दे के होंगी. तो इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस को फाइंड आउट करने का. देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. So when initial guesses aren't given, then we can find the same by the formula, and the formula is x max is less than or equal to plus whole under root of a n minus 1 divided by a n का whole square minus 2 into a n minus 2 of a n. अब ये a n minus 1 ये क्या है? जो भी आपके पास इक्वेशन दी गई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, you know कि polynomial में this is your nth term, this is your n minus 1th term, this is your n minus 2 and so on. ठीक? So taking this equation and substituting the constant values in this equation, because we know that here a is the constant value, so less than or equal to plus minus under root of a n minus 1. a n minus 1 is the second term and the value is minus 4. So minus 4 divided by a n is the first term, the constant is 1 ka whole square minus 2. a n minus 2 is 10, but the sign is minus, so minus 10 divided by 1. Okay, so less than or equal to plus under root of, this will be, after solving this will be 16 plus 20. Okay, minus minus then into, then less than or equal to plus, this will be 36, less than or equal to 36 under root will be a 6. Okay, so it means हमारा जो वैल्यू है x का, बिकॉज हमें क्या निकालना है, हमें इनिशियल गेसेस निकालने हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2. वो जो वैल्यू है x का वो लाई करता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, वो लाई करता है बिटवीन प्लस माइनस 6. दैट मीन्स ये x का वैल्यू जो है वो लाई करेगा फ्रॉम द वैल्यू माइनस 6 टू द वैल्यू 6. अब हम उस वैल्यू को एग्जैक्टली कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन नॉट टेक x1 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x2 इज इक्वल टू प्लस 6, बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो इस चीज़ को करने के लिए नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल कन्वर्ट द वैल्यूज़ फ्रॉम माइनस 6 टू प्लस 6 इन अ टेबुलर फॉर्म लाइक दिस. These are the values of x and we have to find two values among them. We have to find x1 and we have to find the x2. से ये रहा हमारा x का वैल्यू फ्रॉम माइनस 6 टू प्लस 6, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, then 1 2 3 4 5 and 6, right? Okay, so now our root lies between minus 6 and plus 6, but where exactly it lies, which value we have to take? For that we have to take each and every value and substitute it in the equation. In which equation? In this equation. जो भी हमारा यहाँ से वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे एज f of x. So you can write over here, let f of x be equal to x square minus 4x minus 10. Okay, now put each value in this equation. Like at first take minus 6
-6 का होल स्क्वायर माइनस अपना 4 इंटू -6 -10, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे स्टोर करेंगे. द वैल्यू वुड बी 50. And similarly, now take 5 and substitute in this equation. The value will be 35, 22, 11, 2, -5, -10, -13, -14, -13, -10, -5 and 2. Okay. After finding the function values of each x का value, what we have to do is हमें ऐसे दो values को find out करना है जो जहाँ पे consecutive positive and negative numbers होंगे. What we have to do is find the consecutive positive and negative numbers. Consecutive positive and negative numbers can be chosen as initial guesses. अब जो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है ये हमें एक्स में नहीं ढूंढना है, जबकि हमें ये एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ में ढूंढना है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ है, यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव आता है. दिस इज़ अ +2, दिस इज़ अ नेगेटिव -5. और कहीं पे पॉजिटिव, यस, यहाँ पे -5 नेगेटिव आता है और +2 आ जाता है जो कि कंसेक्यूटिव में आता है, माइनस प्लस प्लस माइनस. ओके, so we can choose these two values either or these two values as our initial guesses. अब initial guesses हमें 2 और -5 तो नहीं लेना है because that is the value of f of x. जो भी इनके opposite में आपका x का value है, ठीक है, x is -2, this is -1, your x is 5 and your x is 6. So या तो आपको x1 5 लेना है या तो x 6 लेना है. Either you can take -2 and -1. So therefore either we can take x1 equal to -2 and x2 is equal to -1 as initial guesses, or x1 is equal to 5 and x2 is equal to 6 as initial guesses. Okay? So after finding the initial guesses, this is the way how can we choose the initial guesses when it is not known to us, when it's not given to us. After finding this, this is the formula जो कि हमें आगे की 4 मेथड्स में भी करना है. अगर वहाँ पे भी हमको इनिशियल गेस नहीं देके होगा, the formula would remain same, nothing would get changed, only the equations, only the methods, only the algorithms is going to be changed. So let us for example, इस example के लिए हम x1 को 5 लेते हैं and x2 को 6 लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाए. नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं तो प्लस माइनस करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक, सो let us take x1 is equal to 5 and x2 is equal to 6 and we will solve the same question using the bisection method. Okay, so our equation is x square minus 4x minus 10. So now we will take x1 is equal to 5 and x2 is equal to 6. So let us start with this is the first iteration. Okay, then what we have to do is we have to calculate the value of f of x of 1. That means we have to substitute 5 in this equation. 5 का square minus 4 into 5 minus 10. The value will be equal to -5. f of x2 means take the value of x2 and substitute in this equation. 6 का square minus 4 into 6 minus 10, the value will be equal to 2. The condition is कि दोनों values opposite signs के होने चाहिए, and then only then we can solve this using the bisection method. Then we can calculate x3, that means 5 plus 6 divided by 2. That means 11 by 2, which will be equal to 5.5. Then we have to calculate the value of f of x3. That means
5.5 का होल स्क्वायर, वी हैव टू टेक दिस x3 का वैल्यू इन दिस इक्वेशन, minus 4 into 5.5 minus 10. The value will be equal to minus 1.75. Now we have to check the condition between f of x1 and f of x3. अगर दोनों सेम साइंस के होंगे then we have to replace x1 by x3. So therefore f of x1 and f of x3 are greater than 0. That means they are of the same signs. So replace x1 by x3. It means next iteration में जो x1 है that will be your x3. Okay. So therefore our new search interval will be our x1 will be now 5.5 and our x2 will be 6. इससे क्या हो जाता है, हम अपने रूट के थोड़ा थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं. Okay, this is how in each iteration you have to substitute the values and you have to solve this. अब मैं हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके नहीं दिखाऊंगी. आई विल सिंपली शो यू हाउ टू कैलकुलेट दिस, बट मेक श्योर कि जब आप एग्ज़ाम्स में करें, जब आप नोटबुक्स पे करें, आप पूरा लिख दें. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं उतना लिखूंगी तो वीडियो का जो टाइम है ज़्यादा बढ़ जाता है, इट बिकम्स वेरी लेंथी, तो फिर डाउनलोड करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. तो क्विकली मैं क्वेश्चन सारा करके दिखाऊंगी, बट you have to substitute the values. Okay, so now for the next iteration, x1 is equal to 5.5 and x2 is equal to 6. So after calculating f of x1, it will be minus 1.75 and f of x2 will be equal to 2, क्योंकि वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी. x3 will be 5.75 and f of x3 will be equal to 0.0625. So clearly f of x1 opposite हैं and f of x3 are less than 0, so we have to replace x2 by x3. So हमारा जो न्यू सर्च इंटरवल है वो होगा x1 विल बी सेम रहेगा क्योंकि हमें x2 को रिप्लेस करना है. सो x1 वुड रिमेन एज इट इज़. सो x2 का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम 6 to 5.75. ओके. देन फॉर द थर्ड आइट्रेशन your x1 will be equal to 5.5 and x2 will be equal to 5.75. Again f of x1 we have to calculate and f of x1 will be minus 1.75. f of x2 will be equal to 0.0625 क्योंकि रिप्लेस तो वही हमने किया. देन x3 will be equal to 5.625. x3 is x1 plus x2 divided by 2. So the value will be this. f of x3 by taking this value and substituting in the equation, आपका जो f of x3 का वैल्यू है वो आ जाएगा minus 0.8594. ठीक. अब ये दोनों सेम साइंस के हैं, सो देयरफॉर रिप्लेस x1 by x3. सो जो हमारा नया सर्च इंटरवल है, न्यू सर्च इंटरवल will be 5.625 and 5.75. Okay. Now in iteration number 4, our x1 will be 5.625 and x2 will be 5.75 and f of x1 is equal to minus 0.8594. f of x2 will be equal to 0.0625 and f of x3 will be equal to 5.6875
and f of x3 is equal to minus 0.4023. Therefore, our f of x1 and f of x3 are again greater than 0, same signs के हैं. So replace x1 by x3. So therefore, our new search interval will be what will be our new search interval? x1 को x3 से replace करना है, so it will be 6875. x2 will remain as it is. So in the fifth iteration, okay, now this is your home assignment as well. Please do it by yourself now. It is a lengthy question. It would be having at least 11 iterations in the fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th and 11th. Do all the iterations because the procedure is same. Then at the end, after the 10th iteration and after the 11th iteration, the value x3 का होगा, that remains same. So I will just write the answer over here. Therefore, after observing the 10th and 11th iterations, the value of x3 remains same. So therefore, the root is x is equal to 5.741. This will be your answer. Okay, but please make sure कि आप ये सारी iterations from 5 to 11 घर पे करेंगे, क्योंकि until and unless आप इस चीज़ को खुद से calculate नहीं करेंगे, you won't be able to do it fully or understand it well. It is better कि आप खुद से आप practice करें. It's very easy for me to take the values and show you over here. Okay, so thank you so much. So your one more assignment for this will be, the question for the home assignment is like this: find the root of the equation x is equal to under root of 12 up to 3 decimal digits. Find the root for the above question up to the 4th significant digits. Okay, thank you, have a nice day.